Tensions flared outside Barapada Engineering College in Bhadrak as staff ramped up protests against Biju Janata Dal MLA Prafulla Samal and his son over unpaid salaries. The college, previously under scrutiny for alleged land irregularities, saw the Enforcement Directorate's raids in connection with the case. Reports indicate staff members, unpaid for 17 months, have long protested against the college. However, agitation intensified after the ED's actions against the MLA and his son. The father-son duo faces summons in the alleged land irregularity case with a demand for all relevant documents. This comes after simultaneous raids by the Central Probe Agency at 10 locations linked to MLA Prafulla Samal. The ongoing saga underscores concerns over financial transparency and accountability within educational institutions. As protests escalate, the spotlight on alleged irregularities brings scrutiny to governance and accountability mechanisms. For the affected staff, the issue is not about just unpaid wages but also about the broader integrity of institutional management. आज यहाँ ईडी केस को लेकिन ईडी अधिकारी मानक धन्यवाद देवी से प्रमाणित कर प्राइम ऑफिस रिपोर्ट निश्चय मिली जो से तदंत कर प्रफुल्ल सामल को पुओं को किसी कर्मचारी पूर्वतन कर्मचारी की बर्तमान समन लगी आम ये कहूँ जेहेतु यहाँ जो दुर्नीतिग्रस्त कर्म ये बीएसडी सोसाइटी तेणु ये बीएसडी सोसाइटी को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 धारा 5 एवं धारा 13 एवं एवं जो विधानसभा 2021 मसीह एमेंडमेंट होती नियम अनुसार ये दुर्नीतिग्रस्त बीएसडी सोसाइटी को भंग करा जाऊ। प्रफुल्ल सामल ता पुओ विरोध कर कारण आम जगह आम कलेज करूँ मो पुओ हूँ रश्मिकांत पंडा 25 वर्ष खटिला खटिला 15-18 मास दरमा खाईदे खाईदे 12 दिन जेल रखिले रखला खाईदे सब पैसा खाईदे दादा लोग बाहर बाहर पड़े मो पुओ रही पड़ेगा काली मो पुओ काली पड़ेगा 40 दिन रखदेवे बोली सान पुओ छुट घटुची कौन खाला। Stay tuned to Odisha Post Live to stay updated.